देखो आज आम मनुष्यर रेचन तंत्र विषय आलोचना करवा और विशेषकर वृक्कर गठन विषय आलोचना करवा। मनुष्यर रेचन तंत्र ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम मनुष्यर रेचन तंत्र क्या गठित ना ए पेयर ऑफ किडनी दीटा किडनी अच्छी देख यहाँ ये गोटे किडनी यहाँ कौन लेफ्ट यहाँ कौन यहाँ कौन राइट किडनी बुझला। साधारणतः राइट किडनी इज स्लाइटली लोअर दैन द लेफ्ट किडनी। आम जो किडनी मनुष्यर रेचन तंत्र चित्र करवा दक्षिण पार्श्वर थिबा डाहाण बुक टिके सामान्य तलकू थी कहीं ना इन ऑर्डर टू एटे स्पेस देवा पाई एटे लिवर थाए कौन थाए किडनी पाखे लिवर थाए बुझला। से लेफ्ट किडनी तुलन में राइट किडनी टिके कौन ना तलकू लोअर थाए कौन थाए लोअर थाए। तेणु उदर गहर मध्य बुझला साधारणतः मध्य छदार ठीक तलकू मेरुदंड उभय पार्श्व दीटा किडनी थाए ताकू कह मेटानेफ्रिक किडनी। मनुष्य किडनी की कौन कह मेटानेफ्रिक किडनी। एवं द स्टडी ऑफ किडनी इज नोन एज नेफ्रोलॉजी कौन कहे नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी होची किडनी संबंध अध्ययन करने को कह नेफ्रोलॉजी बुझला। यही जो किडनी तो आकार साधारणतः बीन से उसे बीन मंदी भाया बुझेगा। एवं ये जो किडनी ऊपर भाग में जो ग्रंथि थाए ताकू कह आड्रेनाल ग्रंथि कौन कहे आड्रेनाल ग्रंथि आड्रेनाल ग्लैंड आदि बुकक ग्रंथि कह जाए कौन कहे आदि बुकक ग्रंथि है। दीटा किडनी में दीटा आदि बुकक ग्रंथि थाए जो आड्रेनाल हार्मोन क्षरण होता है। तेणु दीटा किडनी ए किडनी जो हालुआ स्थान को कह हाइलम कौन कहे हाइलम बुझेगा। एवं यही हाइलम निकट में ये बुककीय शिरा ताकू कह रेनाल भेन कौन कहे रेनाल भेन। एवं ये बुककीय धमनी ताकू कह रेनाल आर्टेरी कौन कहे रेनाल आर्टेरी। बुकक सहित रेनाल शब्द जड़ित है। बुकक ये जो बाह्य आवरण कह रेनाल कैप्सूल कौन कहे रेनाल कैप्सूल। रेनाल शब्द यूज होने जान कौन बुकक सहित जड़ित। तेणु बुककीय जो शिरा ताको रेनाल वेन बुककीय धमनी ताको रेनाल आर्टेरी। एवं ये मूत्र सारणी एटा कौन मूत्र सारणी प्रति किडनी रु दीटा मूत्र सारणी ताको कह यूरेटर कौन कहे यूरेटर बुझेगा। यही दीटा मूत्र सारणी क्या सहित संयुक्त होती ना यहाँ हूँ ब्लाडर यूरिनारी ब्लाडर मूत्राशय एटा कौन यूरिनारी ब्लाडर बुझेगा। एवं यहाँ यूरेथ्रा मूत्र मार्ग कौन मूत्र मार्ग यूरेथ्रा से मनुष्यर एक्सक्रीटरी सिस्टम को कह यूरिनोजेनिटल सिस्टम कौन यूरिनोजेनिटल सिस्टम कहीं ना जो बाट दे सीमेंट सिक्रेशन होता है से बाट दे यूरिया सिक्रेशन होता है से आपको कह जाए कौन ना रिप्रोडक्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम परस्पर सहित जड़ित होता है। तेणु ताकू कह जाए यूरिनोजेनिटल सिस्टम कौन कह जाए यूरिनोजेनिटल सिस्टम बुझेगा। तेणु मनुष्य रेचन तंत्र क्या नहीं गठित ना दुईटी बुकक प्रति बुकक दुईटी मूत्र सारणी एवं मूत्राशय को नहीं मनुष्यर रेचन तंत्र गठित बुझेगा। तेणु ये चित्रटी पड़ो 3 मार्क केते मार्क 3 मार्क जो थे आम चित्रटी 1 मार्क मिनिमम 4टा लेबलिंग रे आम दर्शाउथिबा एटा किडनी है एवं यहाँ मूत्र सारणी यहाँ मूत्राशय यहाँ मूत्र मार्ग ये 4टा को दर्शाई एवं चित्रटे कौन हो चित्रटे एवं आपको तुम हाइलम देखेब एवं ये बुककीय शिरा ये बुककीय धमनी बुझेगा। एतिकी दर्शाई चित्रटी कले केते मार्क 3 मार्क। एवं सबु बेले परीक्षा पड़ुछि अधिकांश समय बोर्ड परीक्षा मनुष्यर रेचन तंत्र ही पड़ुछि बुझेगा। ताले आज हम देखिबा साधारणतः मनुष्यर बुकक गठन कौन बुकक गठन बुझेगा। यहाँ हूँ कौन बुकक यहाँ कौन गोटे बुकक बुझेगा जार आकार साधारणतः शिव मंजी करी बीन से कि से बीन से
ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ମଣିଷର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଠିକ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଛି କଣ? ଦିଟା ବୃକକ ରହିଛି। କେତେଟା ବୃକକ ରହିଛି? ଦିଟା ବୃକକ। ଏଇଟା ଦେଖ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ଆମର ମେରୁଦଣ୍ଡ। ଏଇଟା କଣ? ମେରୁଦଣ୍ଡ। ବୁଝିଲା। ମେରୁଦଣ୍ଡର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏଇଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଲେଫ୍ଟ କିଡନୀ, ଏଇଟା ହେଲା କଣ? ରାଇଟ କିଡନୀ। এই যে বুককর এই যে খালুয়া স্থান কুয়াযাଏ হাইলম। কোন কুয়াযাଏ? হাইলম। এবং এই হাইলম ঠারে বুককীয় শিরা, বুককীয় ধমনী আর মূত্রসারণী। ইয়ে হলা মূত্রসারণী। এটা কোন? মূত্রসারণী। এটা হলা ব্লাডর। এটা কোন? ব্লাডর। এটা দেখো কাহিকি ইউরিনোজেনিটাল সিস্টেম কয় এটা হলা ইউটেরস। বুঝলা। এটা হলা ওভারি। বুঝলা। তেণু এইটা হলা ব্লাডর, এইটা হলা কোন বে? না মূত্রমার্গ। তেণু আকু মধ্যে কুয়াযাଏ ইউরিনোজেনিটাল সিস্টেম। কোন কুয়াযাଏ? ইউরিনোজেনিটাল সিস্টেম। তেণু উদর গহ্বର ମଧ୍ୟଚ୍ଛଦାର ଠିକ ତଳକୁ ଉଦର ଗହ୍ୱର ଭିତରେ ମେରୁଦଣ୍ଡର ଉଭୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦୁଇଟି ବୃକକ ରହିଛି। ହେଲା। ବୃକକର ଆକାର ପ୍ରାୟ କୋଉ ଆକୃତିର? ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ପରି। ବିନ୍ ସେ ବିନ୍ ମଞ୍ଜି ଭଳି। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ବିନ୍ ସେପ୍, ବିନ୍ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ, ଶିମ୍ବ ମଞ୍ଜି ଖାଇଲେ କିଡନୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। କଣ ରହିବ? କିଡନୀ ପାଇଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ହେଲା। ବ୍ରେନ୍ ସେପ୍, ଅର୍କୁଟ ଫର୍କୁଟ ଯୋଉଟା ସେଟା ସବୁ ବ୍ରେନ୍ ସେପ୍। ହେଲା। ये बीन मंजी गुरा जो ऑर्गन जो सेप से ऑर्गन से खाद्य से ऑर्गन ପାଇଁ कोन सुस्थ रखिबारे सहायक ही थाए। तेणु बीन मंजी कोन? बीन मंजी। बुझिला। तेणु बुककर आकृति प्राय शिम्ब मंजी परी। ହେଲା। सुस्थ बयप्राप्त व्यक्ति रे बुककर लंब होची 10 रु 12 सेंटीमीटर। एटा होची लेंथ केते? 10 रु 12 सेंटीमीटर। बुझिला। तार प्रस्थ होची ଆମର 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ? 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ଏବଂ ଡାଇମିଟର ଟା ମୋଟେଟା ହଉଛି ମାତ୍ର 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର? 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ବୁଝିଲା। 10 ରୁ 12 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, 5 ରୁ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ପ୍ରସ୍ଥ ଏବଂ 3 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହଉଛି କଣ? ମୋଟେ। ବୁଝିଲା। ସାଧାରଣତଃ ପ୍ରତି ବୃକକରେ ଦେଖ এই ଯୋଉ ବୃକକର এই ଯୋଉ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଲମ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? এই ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ହାଇଲମ୍। ଏଟା ହଉଛି କନକେଭ ସେ କଣ ବେ? କନକେଭ। ହେଲା। ବାହାରଟା ବାହାରକୁ ବାହାରିଥାଏ, ଭିତର ବସ୍ତୁଟା ଖାଲୁଆ ଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଲମ୍। ଏ ହାଇଲମ୍ ଠାରେ ଇଏ ହେଲା ରେନାଲ ଆର୍ଟେରୀ, ବୃକକୀୟ ଧମନୀ। ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ରେନାଲ ଭେନ୍, ବୃକକୀୟ ଶିରା ଏବଂ ମୂତ୍ରସାରଣୀ। ଏ ତିନିଟାଙ୍କ ଏ ହାଇଲମ୍ ଠାରେ ବୃକକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାନ୍ତି। କଣ ହେଇଥାନ୍ତି? ବୃକକ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ବୃକକରେ ଥିବା ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନକୁ କୁହାଯାଏ କଣ? ହାଇଲମ୍। କଣ? ହାଇଲମ୍। ବୁଝିଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଏଲଏସ୍ ଅଫ କିଡନୀ। ଏଇଟା କଣ ବେ? ଏଲଏସ୍ ଅଫ କିଡନୀ, ଲଙ୍ଗିଚୁଡନାଲ ସେକ୍ସନ। କିଡନୀ କି ଯଦି ଆମେ କାଟିବା, ଲଙ୍ଗିଚୁଡନାଲ ମାନେ ଲମ୍ବ ଭାବରେ। ହେଲା। ଆମର ଲମ୍ବ ଭାବରେ କାଟିଲେ ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସଭର୍ସ ପିଏସ୍ ପାରାଲାଲ ରେ କାଟିଲେ। ହେଲା। ଏଇଟା ହଉଛି ଲଙ୍ଗିଚୁଡନାଲ ସେକ୍ସନ ଅଫ କିଡନୀ। ହେଲା। ତାର ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ହାଇଲମ୍। ଏଇଠି ଆମର ବୃକକୀୟ ଧମନୀ, ବୃକକୀୟ ଶିରା ଏବଂ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ବୃକକ ସହିତ କଣ ହେଇଥାଏ? ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। କଣ ହେଇଥାଏ? ସଂଯୁକ୍ତ ହେଇଥାଏ। ଏବଂ ମୂତ୍ରସାରଣୀ ଦେଇ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଆସେ ଏବଂ ମୂତ୍ରାଶୟରେ ମୂତ୍ର ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରୁହେ, ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହେଇଥାଏ। ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଆମର ପ୍ରତି ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା পেলভিস রিজিয়ন। এটা কোন কুହାଯାଏ? পেলভিস রিজিয়ন। ଯୋଉଥିରେ କି କଣ ମୂତ୍ର ସାରଣୀ ମଧ୍ୟକୁ ମୂତ୍ର କଣ ହେଇଥାଏ? ଆସି ଥାଏ। ବୁଝିଲା। ପ୍ରତି ବୃକକ ଭିତରେ ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଣ? ବୃକକୀୟ ନଳିକା। କଣ? ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା। କଣ କୁହାଯାଏ? ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା। ବୁଝିଲା। ପ୍ରତି ବୃକକ ଭିତରେ ରହିଛି କେତେ? 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ, 1 ମିଲିୟନ। ହେଲା। 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ କଣ ରହିଛି? ୟୁରିନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବ। ତାକୁ କୁହାଯାଏ ନେଫ୍ରନ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? that is the structural and functional unit of kidney. Structural and functional unit of kidney.
ବୁକକର ଗଠନଗତ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଏକକୁ କୁହାଯାଏ ନେଫ୍ରନ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପ୍ରତି ବୃକକରେ ରହିଛି 10 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ବୃକକୀୟ ନଳିକା, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମୂତ୍ରଜନ ନଳିକା ବା ନେଫ୍ରନ୍। କଣ କୁହାଯାଏ? ତେଣୁ ଷ୍ଟଡି ଅଫ୍ ଦି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଫଙ୍କସନାଲ ୟୁନିଟ୍ ଅଫ୍ କିଡନୀ ଇଜ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ନେଫ୍ରନ୍। ସେ ନେଫ୍ରନ୍ ରେ କଣ ରହିଛି ନା ଇଏ ହଉଛି କଣ ନା ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲୁଆ କପ୍ ବା ଗିନା ଆକୃତିର ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲୁଆ ଅଂଶକୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ବାୟମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। କଣ କୁହାଯାଏ? ବାୟମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ। ଏ ବାୟମାନ୍ସ କ୍ୟାପସୁଲ ଭିତରେ ଏଇ ଯୋଉ ବୃକକୀୟ ଆଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଅନ୍ତର୍ଧମନୀ ଏବଂ ଏଇଟା ହେଲା ଇଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ ବହିର୍ଧମନୀ। এই অন্তর্ধমনী আর বহির্ধমনী ইয়ে পরস্পর সহিত গুড়ে হইকিনা গোটে কৈশিক রক্ত গুচ্ছ তৈরি করতে যাকে কুহযায় গ্লোমেরুলস। কোণ গ্লোমেরুলস। তেমন বায়োমাস ক্যাপসুলর এই যে কপ বা গিনা আকৃতির অংশকে কুহযায় বায়োমাস ক্যাপসুল। সেই বায়োমাস ক্যাপসুল ভিতরে আমার বুককীয় ধমনী অন্তর্বাহী উপধমনী তাকে কুহযায় আফরেন্ট আর্টেরিওল ଆଉ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଇଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ। ଏ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀର ଡାଇମିଟରଟା ଟିକେ ଅଧିକ। ରକ୍ତ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ମାଧ୍ୟମରେ ରକ୍ତ ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଆଉ ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ପରସ୍ପର ସହିତ ଗୁଡ଼େଇ ହେଇକିନା ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଲାରି ଏଇ ଯୋଉ କୈଶିକ ଗୁଚ୍ଛ ତିଆରି କରିଥାନ୍ତି ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ। ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କଣ ହୁଏ? ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ। କଣ ହୁଏ? ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। କଣ କୁହାଯାଏ? ଗ୍ଲୋମେରୁଲାର ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଆଉ ଏମୋନିଆର ରାସାୟନିକ ସଂଯୋଜନରେ ଯକୃତରେ ୟୁରିଆ ତିଆରି ହୁଏ। ୟୁରିଆ ରକ୍ତ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁକକ ନିକଟକୁ ଆସେ। ବୁକକରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ। ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହବ, ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ ହବ। ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହେଇଯିବ। କଣ ହେଇଯିବ? ରକ୍ତରୁ ୟୁରିଆ ଅଲଗା ହେଇଯିବ ଏବଂ ୟୁରିଆ ଜଳରେ ଦ୍ରବୀଭୂତ ହୋଇ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ କଣ ନା ମୂତ୍ର ସରଣୀ ଜରିଆରେ କଣ ମୂତ୍ରାଶୟକୁ ଯିବ ଏବଂ ମୂତ୍ର ମାର୍ଗ ଦେଇ ନିଷ୍କାସନ ହବ। ତେଣୁ ବୁକକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି କଣ ନା ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ। କଣ? ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଟ୍ରେସନ, ପରିଶ୍ରବଣ। କଣ? ପରିଶ୍ରବଣ। ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପୁନଃ ଶୋଷଣ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ବୁକକୀୟ ଯୋଉ ନଳିକା ରହିଛି ରେନାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲ୍ସରେ ହେଲା PCT ଆଉ DCT ଅଛି, ସେଇଠି କଣ ହବ ନା ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣ ହବ ୱିଥ ଦ ହେଲ୍ପ ଅଫ ADH ହରମୋନ, ଆଣ୍ଟି ଡ୍ୟୁରେଟିକ ହରମୋନ। ହେଲା ସେ ଆଣ୍ଟି ଡ୍ୟୁରେଟିକ ହରମୋନ ର ପ୍ରଭାବରେ ଜଳ ପୁନଃ ଶୋଷିତ ହୋଇ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଏ। ହେଲା ଯୋଉମାନଙ୍କର ADH ହରମୋନର ଅଭାବ ହୁଏ ସେମାନଙ୍କର ଅଧିକ ଜଳ ମୂତ୍ର ଆକାରରେ ବାହାରକୁ ବାହାରେ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବହୁମୂତ୍ର ରୋଗ ବା ପଲିୟୁରିଆ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଦ ଲ୍ୟାକ୍ ଅଫ। ତାହେଲେ ଦେଖ ଥାର୍ଡ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କିଡନୀ ହେଲା କଣ ନା କ୍ଷରଣ। କଣ? କ୍ଷରଣ ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ ସିକ୍ରେସନ। କଣ କହୁଛେ? ସିକ୍ରେସନ। କିଡନୀ ସାଧାରଣତଃ ଦିଟା ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ। ଗୋଟିଏ ହେଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ। କଣ? ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ। ବୁଝିଲା? ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ କଣ କରେ? ଫର୍ମେସନ ଅଫ ଆରବିସି। ଆରବିସି ହେଲା ରେଡ ବ୍ଲଡ କର୍ପସେଲ୍ସ। ବୁଝିଲା? এই ଯୋଉ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା କୋଉଠି ତିଆରି ହୁଏ ନା ବୋନ ମ୍ୟାରୋ। କୋଉଠି? ବୋନ ମ୍ୟାରୋ, ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା ଯୋଉ ଅଛି ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୋଷଟା ଅଛି, ମାଂସ ଖାଇଲା ବେଳେ ଦେଖିବ ହାଡ଼ ଭିତରେ ଯୋଉ ଶୋଷଟା ଶୋଷାରୁଛୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଅସ୍ଥି ମଜ୍ଜା। ତା ଭିତରେ କିଡନୀରୁ ଏଇ ଯୋଉ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ ହୁଏ, ସେ ଆରବିସି ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ବୁଝିଲା? ତ ମେନ୍ ଫଙ୍କସନ ଅଫ କିଡନୀ ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରେନିନ ହରମୋନ। କି ହରମୋନ? ରେନିନ ହରମୋନ। এই ରେନିନ ହରମୋନ କଣ କରେ? ହାଇ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। କଣ କରେ? ରେନିନ ହରମୋନ। କିଡନୀ ଦିଟା ହରମୋନ କ୍ଷରଣ କରେ, ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହରମୋନ। ଗୋଟେ ହେଲା ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ, ପରୀକ୍ଷାରେ ସବୁବେଳେ କରୁଛି। ହେଲା କିଡନୀ କ୍ଷରିତ କେଉଁ ହରମୋନ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରି କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନ, ଯିଏକି ଆରବିସି ତିଆରି କରେ। ଆମେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ତିଆରି ହଉଛି ସେ ହଉଛି ଏରିଥ୍ରୋପୋଏଟିନ ହରମୋନର ପ୍ରଭାବରେ। ଦ୍ୱିତୀୟଟା ହେଲା କଣ? ରେନିନ ହରମୋନ, ଯିଏ କଣ କରେ? ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଡାଇବେଟିସ୍, କିଡନୀ ଫେଲୁଅର ହେଲା, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ କିଡନୀ ଉପରେ ଚାପ ପଇଲା, ସେମାନଙ୍କର ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବି ବାହାରିବ। କଣ ବାହାରିବ? ଡାଇବେଟିସ୍ ବାହାରିଲା ମାନେ ବ୍ଲଡ ପ୍ରେସର ବାହାରିବ। ବୁଝିଲା? ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ଫଙ୍କସନ ହେଲା କଣ? ନିଷ୍କାସନ। କଣ? ନିଷ୍କାସନ ବା ଏକ୍ସକ୍ରେସନ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ବୃକକ ଚାରୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଗୋଟେ ହେଲା ପରିଶ୍ରବଣ, ପୁନଃ ଶୋଷଣ, କ୍ଷରଣ ଆଉ ନିଷ୍କାସନ। ବୁଝିଲା? ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ
এইটা হচ্ছে দেখ এইটা হচ্ছে গোটে নেফ্রন কোন গোটে নেফ্রন যাহাକୁ ଆମେ କହୁଛେ ବୃକକର ଗଠନଗତ ଓ କାର୍ଯ୍ୟଗତ ଏକକ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ୟୁନିଫେରସ୍ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବା ନେଫ୍ରନ। ତାହେଲେ ଯୋଉ ନେଫ୍ରନରେ ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଏଇଟା ହେଲା କଣ ନା ବ୍ଲଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ। କଣ ଆଫରେଣ୍ଟ ଆର୍ଟେରିଓଲ ବା ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଦେଇ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ହେଲା। এইটা হচ্ছে ইফরেন্ট বহির্বাহী উপধমনী, এটা কোন বহির্বাহী উপধমনী ইফরেন্ট আর্টেরিওল বুঝলা। তেণু এইটা হচ্ছে গ্লোমেরুলাস, এটা কোন গ্লোমেরুলাস। এই গ্লোমেরুলাসরে কোন হুয়ে না রক্ত ছଣା হুয়ে, কোন হুয়ে ব্লড ফিল্টার হুয়ে কোটে গ্লোমেরুলাস। এইটা হলা বাইমাস ক্যাপসুল, কোন এটা বাইমাস ক্যাপসুল কপ বা গিলা আকৃতির অংশକୁ কুହାଯାଏ বাইমাস ক্যাপসুল ହେଲା। ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ୟାର ଡାଇମିଟରଟା ଟିକେ ଅଧିକ, ବହିର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ବାହୀ ଉପଧମନୀ ଟିକେ ଚଉଡା। এই অন্তর্বাহী উপধমনী ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗୁଡେଇ ହେଇକିନା ଗୋଟେ ବ୍ଲଡ କ୍ୟାପିଲାରି ସୃଷ୍ଟି କରେ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ। এই গ্লোমেরুলাসରେ রক্ত ছଣା ହୁଏ, କଣ ହୁଏ রক্ତ ছଣା ହୁଏ ବୁଝିଲା। ଏବଂ এই ଯୋଉ ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଇଏ ମିଶିଲେ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ମାଲପିଜିଆନ ପିଣ୍ଡି। କଣ କୁହାଯାଏ ମାଲପିଜିଆନ ପିଣ୍ଡି। ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାର୍ସେଲୋ ମାଲପିଗି, କିଏ ମାର୍ସେଲୋ ମାଲପିଗିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ ବୁଝିଲା। এই ମାର୍ସେଲୋ ମାଲପିଗିଙ୍କ ନାମ ଅନୁସାରେ এই ବାୟୋମାସ୍ କ୍ୟାପସୁଲ ଆଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ମିଶି ମାଲପିଜିଆନ ପିଣ୍ଡି ଗଠନ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କଣ ହୁଏ ନା ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ, କଣ ହୁଏ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ। ପ୍ରତି ମିନିଟରେ 1250 ml ବ୍ଲଡ ହେଲା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରେ ଏବଂ ଦିନକୁ 1800 ml ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ। କଣ ହୁଏ 1800 ଲିଟର ବ୍ଲଡ ଫିଲ୍ଟର ହୁଏ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ। ତାହେଲେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କଣ ହୁଏ ଦେଖ ନା ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ରହିଛି ସେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ଯୋଉ ରକ୍ତ ପ୍ରବେଶ କରେ ରକ୍ତରେ ଯୋଉ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୋଟିନ ଥାନ୍ତି, କଣ ଥାନ୍ତି ପ୍ରୋଟିନ ଥାଏ ଆଉ କଣ ଥାଏ ନା ଆରବିସି ଥାଏ। ଏମାନେ ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ମଧ୍ୟରେ ପରିଶ୍ରୁତ ହେଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ଏମାନେ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ବାହାରେ ରହିଯାଆନ୍ତି। ବାକି ଏଇ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ କଣ ହୁଏ ନା ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ, କଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ ବୁଝିଲା, ଆମର ୱାଟର ଜଳ, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ ବୁଝିଲା, କ୍ରିଏଟିନିନ ବୁଝିଲା, ସୋଡିୟମ ଆଉ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ବୁଝିଲା। ଏମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ପରିଷ୍କାର ହେଲା ପରେ ହେଲା ସେଠି କଣ ହୁଏ ନା ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ଆରବିସି ଗୁଡିକ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୋଟିନ ଆଉ ଆରବିସି ଗୁଡିକ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସ ଏଠି ଯୋଉ ଛୋଟ ଛୋଟ ରନ୍ଧ୍ର ଅଛି ତା ମଧ୍ୟରେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାରୀ, ତେଣୁ ସେମାନେ ଶରୀର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତି ବାହାରି। ବାକି ଏଇ ଯୋଉ ଉପାଦାନ ଗୁଡିକ ଏମାନେ ସବୁ କୋଉଠି ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନା ଆକୁ କୁହାଯାଏ କଣ ନା ବୃକକୀୟ ନଳିକା। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ନେଫ୍ରନ ଦିଟା ଅଂଶ ଅଛି, ଗୋଟେ ହେଲା ରେନାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲ, ଏଇଟା ହେଲା ରେନାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବୁଝିଲା। ଏଇଟା କଣ ରେନାଲ ଟ୍ୟୁବୁଲ ବୁଝିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ରେନାଲ କର୍ପସେଲ୍ସ, ଏଇଟା କଣ ରେନାଲ କର୍ପସେଲ୍ସ। ତେଣୁ ଦିଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ତେଣୁ এইটা হচ্ছে গ্লোমেরুলস আর বায়োমাস ক্যাপসুল মিশি মালপিজিয়ান পিଣ୍ଡି গঠন କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଗ୍ଲୋମେରୁଲସରେ ରକ୍ତ ଛଣା ହୁଏ। ରକ୍ତ ଛଣା ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏଇ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବା ଉପାଦାନ ରକ୍ତର କେଉଁ କେଉଁ ଉପାଦାନ ସବୁ ରହିଯାଇଥାନ୍ତି ନା ଆରବିସି ହେଲା, ଗ୍ଲୁକୋଜ, ୱାଟର ହେଲା। ଏଇ ଆରବିସି ଆଉ ପ୍ରୋଟିନ ଏମାନେ ଯାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବାକି କିଏ ଯାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ, ଜଳ ହେଲା, ୟୁରିଆ, ୟୁରିକ ଏସିଡ, କ୍ରିଏଟିନିନ, ସୋଡିୟମ ପୋଟାସିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ ଏମାନେ ସବୁ ବୃକକୀୟ ନଳିକା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥାନ୍ତି। ତାହେଲେ ସେଥିରୁ ଆମର କଣ ନା ସେଥିରୁ ଆମର ଯୋଉ ଗ୍ଲୁକୋଜ ରହିଲା, କଣ ରହିଲା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଏବଂ ୱାଟର ଏବଂ ଏମିନୋ ଏସିଡ ଏମାନେ ସବୁ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ଏମାନେ ସବୁ କଣ ଶରୀର ପାଇଁ ଦରକାରୀ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆକୁ କୁହାଯାଏ ପିସିଟି, କଣ କୁହାଯାଏ ପିସିଟି। ପିସିଟି ର ପୁରା ନାମ ହେଲା ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ ଟ୍ୟୁବୁଲ, କଣ ପ୍ରୋକ୍ସିମାଲ କନଭୁଲେଟେଡ ଟ୍ୟୁବୁଲ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଥାନ୍ତି, କଣ ଥାନ୍ତି ବେ ମାଇକ୍ରୋଭିଲି ଥାନ୍ତି। ଏମାନେ କଣ କରନ୍ତି ନା ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। କଣ କରନ୍ତି ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି। ତାହେଲେ ଜଳର ପୁନଃ ଶୋଷଣ ବାଇ ଦି ହେଲ୍ପ ଅଫ ଏଡିଏଚ୍ ହରମୋନ, কি হরমোন এডিএচ। এই এডিএচ র পুরা নাম হলা আন্টি ডিউরেটিক হরমোন। কোন তাকে কুয়া যায় আন্টি ডিউরেটিক হরমোন। এই এডিএচ হরমোন র
प्रभाव रे एडीएच हार्मोन कोठु क्षरण हुए ना पिट्यूटरी रे। पिट्यूटरी हमर अग्र मस्तिष्क रे अछि, मस्तिष्क रे से पिट्यूटरी रो जो पोस्टेरियर लोब अछि सेथिरो एडीएच हार्मोन क्षरण हुए एवं एडीएच हार्मोन रो प्रभाव रे हमर जो प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल अछि सेइठे जलर पुनः शोषण हुए फल रे अधिकांश जल पुनः शोषित होई शरीर मध्यकू ग्लूकोज नलिका मध्यकू जाइथांती भारी बुझला। जो मानकर एडीएच हार्मोन रो अभाव हुए सेमानक ठारे अधिक जल मूत्र आकार रे बाहर को बाहर जाए जहा को कुआ जाए डाईयूरेसिस बा पॉलीयूरिया फल रे दिन को 10 रु 20 लिटर पर्यंत परिस्रा हो एते ना 10 रु 20 लिटर पर्यंत परिस्रा ताकू कुआ जाए बहुमूत्र रोग। कोन कुआ जाए बहुमूत्र रोग बा डायबिटीज। कोन डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज दी प्रकार गोटे हला रक्त रे ग्लूकोज लेवल बढ़ी गले बाई लेस ऑफ इंसुलिन हार्मोन हेले ताकू डायबिटीज मेलेटस कुआ जाए मधुमेह। किंतु जेते बेले एडीएच हार्मोन रो अभाव हबो सेते बेले अधिकांश जल बुझला मूत्र आकार रे बाहर को बाहर जाए काहे ना एडीएच हार्मोन काम होची जलर पुनः शोषण करियो वाटर रिअब्जॉर्प्शन एवं ता सहित ग्लूकोज मध्य कोन जल रे जो ग्लूकोज मिसिकना अछि से माने सब दरकारी उपादान गुडी को अवशोषित होइना शरीर भीतर को जांती है बुझला। जो मानकर एडीएच हार्मोन रो अभाव हुए से मानकर अधिक जल मूत्र आकार रे बाहर को जाए मूत्र रे भी ग्लूकोज बाहर जाए कोन जाए ग्लूकोज बाहर जाए जहा को कुआ जाए बहुमूत्र रोग। जो मानकर बारंबार पैसा अछि दैट इज द सिम्पटम ऑफ डायबिटीज। बारंबार जो मानकर कोन होउची परिस्रा होउची 10 रु 20 थर लिटर पर्यंत परिस्रा हो हला नॉर्मली हमर 2 रु 3 लिटर पर्यंत परिस्रा हुए किंतु जो मानकर एडीएच हार्मोन अभाव हुए से माने बारंबार परिस्रा लागे ताकू कुआ जाए डायबिटीज इंसिपिडस। कोन कुआ जाए डायबिटीज इंसिपिडस जे कि एडीएच हार्मोन अभाव रे हुए हला। तेनो जो पीसीटी अछि से पीसीटी रे जल ग्लूकोज ए सब रिअब्जॉर्प्शन हुए हला। बाकी आकू हमर आकू कुआ जाए कोन पीसीटी येला डीसीटी कोन डीसीटी डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल एवं एटा होची लूप ऑफ हेनली हला। तेनो एठे कोन हुए ना जल आ ग्लूकोज अमीनो अम्ल ए सब शरीर पय दरकारी तेनो सेगुडी को पुनः शोषित होई शरीर भीतर को जाय मानी। बाकी को गुडी को ना बाकी रहि गेला के यूरिया के रहिला यूरिया यूरिक एसिड क्रिएटिनिन हला एवं कोन वर्ज्य जल वाटर सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड एमान सब मूत्र आकार रे को आकार रे मूत्र आकार रे हमर जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल रहिछि मूत्र संग्रह नलिका ता मध्य को प्रवेश करी थांती हैला। एवं मूत्र संग्रह नलिका गुडी को कोठे खोली थाए गभणी बस्ती कोठे गभणी बस्ती ताकू कहला जाय पेल्विस ऑफ यूरेटर एवं से पेल्विस ऑफ यूरेटर निकट रे मूत्र संग्रह नलिका गुडी को कोन हबो ना यूरेटर मध्य को जाय थाए जा फल रे मूत्र कोन मूत्र सारणी माध्यम रे मूत्राशय को आसी थाए एवं मूत्राशय रे मूत्र संचित होइला रहे मूत्र मार्ग देई निष्कासन होई। तनो गोटे ह्यूमन ब्लाडर कैपेसिटी होची 300 ml पर्यंत कोन 300 ml पर्यंत यूरिन के स्टोर करी पारिबो कोन करी पारिबो 300 ml पर्यंत यूरिन के हमर 1800 लिटर रक्त फिल्टर हैला परे मात्र हैला 2 लिटर रु 2.5 लिटर पर्यंत परिस्रा हो यूरिन बाहरिबो कोन बाहरिबो यूरिन बाहर नॉर्मल बुझला। एवं ब्लाडर कैपेसिटी होची 300 केते 300 तनो जण व्यक्ति दिन को हाराहारी 4 5 6 थर एक जीव केते जीव 6 थर एक जीव जदि बारंबार परिस्रा लागिला ता माने रक्त हमर मूत्र रे अत्यधिक जल ग्लूकोज बुझेला सोडियम क्लोराइड पोटासियम क्लोराइड ए सब उपादान गुडी को कोन बाहर को बाहर जाई थांती। साधारणतः मूत्र रो वर्ण होची ईषत हळदिया कोन मूत्र रो वर्ण कोन ईषत हळदिया बुझेला काहे ना मूत्र रे गोटे पिगमेंट थाए जहा को कहआ जाय यूरोक्रोम कोन कहआ जाय यूरोक्रोम पिगमेंट बुझेला यूरोक्रोम पिगमेंट पाई मूत्र रो वर्ण कोन ईषत